सर वो आपका देवरा का लुक एकदम आग लगा रहे हो आप इंडस्ट्री में एकदम मजा आ जाएगी। 30 साल के बाद नहीं सर आप हर पिक्चर में आग लगा रहे हो, हर पिक्चर में आग लगा रहे हो। हम एकदम फैन हैं हम तुम। बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर। थैंक यू सर पीछे पावर कपल एक फोटो करते हैं, पावर कपल यहाँ पर। यस एवरीबॉडी इज पावर कप। करीना जी आपको देवरा का लुक कैसा लगा सर? एकदम थैंक यू। Bye, Bibu. Thank you. गाड़ी में बैठे सचिन सर Right, not right now, please. Sir, सर सचिन सर यहाँ पर धीरे धीरे आराम से। Thank you. आराम से दोस्त Move. साइड दे दो। थैंक यू। एक सेकंड गाड़ी से दूर रहना प्लीज। थैंक यू। It was just euphoric to be there to see. I always know that women can also do everything that a man can, maybe more. But when I saw it actually on the field, I was extremely proud. And I'm so happy that Sachin sir and Ashish ji have mentioned, because I'm also part of the ISPF family, that one day we can have a female batter and hopefully that team will be my team. So that is my first dream, to have that, because I also have, I hope, and it's a request and it's a prayer and it's everything, that the women cricketers get the standing and the darja that the male cricketers have. That is also a dream to see in our country, and because they are such amazing players, and slowly I think I want them to get and receive that stardom that our male cricketers also have. So then I can take it on to the celluloid. Oh yes, thank you so much, and I hope that will come true soon and at the earliest. Can ask another question to Saif Ali Khan. We spoke about the ISPA. So with my brother Ajit, couple of friends that we rub shoulders with on a regular basis. Jatin is sitting here, Praveen is also here. Both are, involved and committed in making ISPL a big success. Or lot goes, जो हम कहते हैं कि behind the scenes जो बहुत सारे चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाते हैं, इनके साथ हमने बहुत टाइम बिताया, and we felt that 50-50 rule, जो कि फ्रॉम 6 to 8 ओवर तक अगर गेम कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि ना वन टीम इज हैविंग अ गुड टाइम, द अदर टीम इज स्ट्रगलिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग कैचिंग अप गेम, और उसमें टाइम नहीं होता है अपना, तो उसमें हाउ कैन वी गिव देम अनदर चांस टू कम बैक इन द गेम। 50-50 का बेसिकली जो आपने देखा था रूल, जहाँ पे यू गेट whatever number of runs that you've scored, you get 50% more, and if you fall short of that given target of 16 runs an over, then you get only 50% of what you have scored. तो वो डिडक्ट भी हो जाते हैं, तो बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं रन्स। तो वहाँ पे बैट्समैन का थिंकिंग जो एक टेम्परामेंट होता है, वहाँ कई बार क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आपके स्ट्रेटजीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये सही स्ट्रेटजी है या नहीं, तो कहीं ना कहीं दिमाग भी यूज़ करके खेलना पड़ता है वहाँ पे। वी थॉट इट वाज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो एक था। सेकंड वाज गिविंग 9 रन्स, तो बैट्समैन अगर मारता है, आई एम अगेन गोइंग टू से कि बैट्समैन बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी हम शायद बैटर बोलने लगेंगे। जैसे आशीष जी ने भी कहा कि ना सिर्फ लड़के नहीं, हम लड़कियों को भी इनकरेज करेंगे इसके लिए, तो मैं बैटर कहना शुरू करूँगा। आई थिंक
जो लंबे शॉट्स मारते हैं तो उसके लिए 6 से ज़्यादा रन होने चाहिए just to make it exciting. Last ball 8 runs to win, you can still win a game. 9 runs जहाँ इस टूर्नामेंट में जो हम खेले वहाँ पे 4 बैटर्स ने स्कोर किया था. The third one was tape ball, reverse swing. अगर हम बैटर को कुछ एडवांटेज दे रहे हैं तो bowlers also need to get in the game. So reverse swing जो मैं खुद प्रैक्टिस करता था during my playing days, I used to tape the ball on one side. उसका बेसिकली एक तरफ हम सीजन बॉल के साथ हम शाइनी और रफ साइड दिखते थे, मगर टेनिस बॉल के साथ एक तरफ जहाँ पे टेप होती है वो लगा के रिवर्स स्विंग की मैं प्रैक्टिस करता था इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए. तो आई थॉट व्हाई नॉट दिस बी इंट्रोड्यूस इन दिस फॉर्मेट. और अगर ये होता है इंट्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे बैटर का टेक्निक भी टेस्ट होता है, जो आपने कई बार देखा होगा, क्योंकि टेनिस बॉल इज अबाउट कीपिंग योर हैंड्स अवे फ्रॉम द बॉडी, जो हम कहते हैं कि झटके वाला बैक स्विंग जिससे यू गेट डिस्टेंस. मगर जब बॉल रिवर्स होने लगता है तो यू नीड टू कीप योर हैंड्स क्लोजर टू योर बॉडी. तो ये टेक्निक में एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, विच वॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट गिवन द वे इट स्टार्टेड, बट स्लोली प्लेयर्स अडेप्टेड. एंड मैं कहूँगा कि ओवरऑल जो इंटरेस्ट लेवल था बहुत अच्छा था. Sir, अभी आपने कहा कि the moments on screen where we saw those audio visuals, there were so many beautiful moments right from where we launched till the final. Any specific or any special memory that comes to your mind which will be unforgettable as far as the ISPL is concerned? Many memories, because right from match 1 to the finals, the way all the players showed their commitment, their love, their passion for the game was magnificent. मगर मेरे लिए एक थोड़ा सा अलग मेमोरी जो मैं कहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट है. When I met आमिर, जिसका मैंने वीडियो देखा था पहले सोशल मीडिया पे, and when I went to Kashmir I ended up meeting him. उसके बाद मैंने उसको ये भी कहा था कि I want you to come to Mumbai and play the first ball of ISPL. ये मेरा ड्रीम है, तुमने मेरा टी शर्ट पहन के खेला था, मैं तुम्हारा टी शर्ट पहन के खेलूँगा और वो ड्रीम हम पूरा कर पाए. और जिस तरह से वो आके वहाँ पे पहला बॉल खेला, सिर्फ मैं नहीं मगर मेरे साथ द होल कंट्री वाज टॉकिंग अबाउट इट, और सच एन इंस्पिरेशन. तो मैं कहूँगा कि वो मेरे लिए एक बहुत खास मोमेंट था. Yes, absolutely. हमारे लिए भी सर बहुत वो special moment थी. To start this interaction, we just had a triumph in the T20 World Cup. So what are your thoughts on a potential film on the lines of the T20 World Cup triumph? You know, I think sports films are really exciting to watch, but they're also difficult to make. So provided we can capture the excitement and the challenges that people go through to achieve these things, I think sports films are wonderful. And I hope we can find the right people to make it really well, because like I said, they're difficult to make. But I think the Indian team at different levels for a while now has been shining very bright internationally. It's taken a long time to get there, and the sun of cricket seems to shine on different nations, and now it's our time. So it's a wonderful time for all of us to be very proud of. And the T20, of course, is an amazing story, and it would be wonderful. Yes, absolutely. Look at So I am completely awestruck right now, being next to him as well and being part of the ISPL. Coming back to my journey of cricket, I think I've always, been a great fan of watching and enjoying the sport for its team spirit, for the fact that it stands for the heart of what India also stands for. I think when there is a cricket match, every Indian somehow is just glued to, the screen, and your heart is beating. So I've always enjoyed watching that, but never thought I would be a co-owner of a team. Then also never thought
I would be married to, into a cricket home where the legend himself and his son, that I would, interact and hear so many old cricketing stories. So definitely over time it has evolved. The love and the passion has grown. Definitely, it's not happened overnight. It's grown because as you grow older, you hear such stories from Saif about, cricket back in the 60s and 70s, and it kind of just gives you also more and more love for the sport when you hear it. And now at the stadium on the launch opening day of the ISPL, to see those players and my team members, Tigers of Kolkata, play with that passion, I think that even added more, to the love of cricket. Absolutely. Thank you so much. I'll come back and Kolkata, Mrs. Aksha Kamboj, along with the co-owners, Mrs. Kareena Kapoor Khan and Mr. Saif Ali Khan, to kindly come up on stage. And may I request Mr. Sachin Tendulkar to kindly do the honors and present a token of appreciation on behalf of the ISPL to Mrs. Aksha Kamboj, Mrs. Kareena Kapoor Khan and Mr. Saif Ali Khan, champions of the first season of the ISPL. Thank you. So those were the 6 teams, and how catchy those anthems are of each and every team. And a couple of sights, if you must have seen, that brilliant catch, that middle stump being knocked out, that tape ball being used, some priceless reactions that we saw. And that is what real candid moments are all about. And that is what we got to see in the ISPL Season 1. Can we have one big round of applause?
मिल रहा है ना तो धक्का मत दे। हाँ ये जगह क्लियर कर दो अभी क्या अभी क्लियर आगे थोड़ा आगे 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 थोड़ा आगे थोड़ा आगे सर करीना मैम यहाँ पे सेंटर करीना मैम सामने देखिए मैम सामने Okay, done. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you. Please, our event is started. We have to go. Please, thank you. Thank you. सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे Thank you. सर आज